Hello everyone, welcome to Good Guide Show of ABC Magical World. I'm Amanpreet Singh Arora, CEO of ABC Magical World. So today we'll be talking about some skin problems in children. For that we have a renowned dermatologist of Ludhiana, Dr. Vidushi Singhal, as a good guide. So Dr. Vidushi is a practicing dermatologist and aesthetic laser physician in Ludhiana. She has her own clinic by the name of Orthoderma in Sabhanagar. Earlier, she was working as assistant professor in DMC Ludhiana. She loves her work and aesthetics is her passion. So, welcome, ma'am. Thank you so much, sir. Ma'am, as I told that we'll be talking about some general problems of skin in the children. So, I'll be asking you a few questions related to that. Right, right. We have seen that there are sometimes there are white spots in children. So, in the face. So, what is the reason and what should be done for that? Sir, actually, these white spots, a very common misconception is that these white spots are due to calcium deficiency. Yeah. पर ये कैल्शियम डेफिशिएंसी से नहीं होते. इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्जिमा इन चिल्ड्रन. इसको हम लोग पिट्रियासिस एल्बा कहते हैं. एंड fortunately, it's a very simple disease to treat. We just need to give the patient a mild steroid or a steroid sparing agent like tacrolimus. But personally, in my practice, I do like to give the child a multivitamin syrup, which they need to take for about a month or 2 months. This gives me an opportunity to tell the parents about good nutrition in children. Because वो एक white spot देख के उनको लगता they are more receptive to nutritional advice from a dermatologist. So I do tend to give a multivitamin syrup for a month. Otherwise, अगर आप नहीं भी कुछ करते, if you just look after the diet of the child and apply a good quality cold cream 2 times a day, this is self-limiting disease. 2 या 3 महीने में it's going to end, but it tends to come back. जब भी season change होगा, especially now from winters to summer, this disease is going to come back in the child for a few years. फिर ये अपने आप पूरा ठीक हो जाती है. And if the child has dandruff, तो anti dandruff shampoo जरूर use करने चाहिए if associated with this disease. Okay. Ma'am, like weather is changing and there are a lot of mosquitoes also, right? So what about Right. right? So what about this infection from this mosquito bites and what is the prevention and what is the treatment for that? हाँ जी सर. See, बच्चों में mosquito bites, it doesn't lead to an infection. It leads to a very increased form of allergy, which is known as a hypersensitivity reaction. So उनमें क्या है? It is better to prevent this hypersensitivity reaction by preventing the mosquito bites. तो वो हम कैसे कर सकते हैं? Like जैसे अगर हमारे घर के आसपास कहीं कोई stagnant water है, जैसे coolers में पानी है, तो वो हमें हटाना है, so that there is no ground for the mosquitoes to breed. We can also use the mosquito repellent sprays. And for the children, 2 times in a day, we need to apply coconut oil या badam rogan oil भी आप लगा सकते हैं. Once in the morning after they've had a bath and once in the evening before they go out to play. It is said that coconut oil itself is known to repel mosquitoes. ठीक है जी. एंड जब बच्चे इवनिंग में बाहर खेलने जा रहे हैं तो उस टाइम पे उनको फुल स्लीव्स की क्लोथिंग और फुल पजामा पहन के, सो दैट वी कवर द बॉडी पार्ट्स एंड दस प्रिवेंट द मॉस्किटो बाइट्स फ्रॉम हैपनिंग. और अगर ये मॉस्किटो बाइट्स हो जाती हैं, देन वी हैव टू ट्रीट विद सिंपल थिंग्स लाइक कैलामीन लोशन और एंटी एलर्जिक सिरप्स, जैसे कि लीवोसिट्राजीन का सिरप हम देंगे तो द चाइल्ड विल बी मोर कंफर्टेबल. अगर बहुत ज्यादा इरिटेशन है या बर्निंग है तो वी कैन डू आइसिंग ऑल्सो. It's a simple thing to treat, but it's always better to protect the child and prevent this disease from happening. Thank you, ma'am. So, ma'am, एक हम लोग देख रहे हैं like children getting white hair in this very young age. So what is the reason of that and how it can be treated? So the main reason for white hair in young children, in fact, हम लोग देखते हैं 4 years, 5 years के बच्चे आते हैं with white hair. This is a nutritional problem, sir. It is because of anemia, because of vitamin B12 deficiency, because of vitamin D deficiency. So nutrition is the main thing. अगर हम बच्चे कि खाने पीने उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे, then this is a very easily preventable disease. Yes, definitely there is a genetic component also.
but nutrition plays a very important role. Genetics के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, but we can make sure that the child is eating healthy. And especially now during lockdown, you know, when the entire family is home and all of us are looking after what the child eats, कुछ you know ऐसा नहीं है कि parents नहीं हैं or they are working, so child is eating whatever he or she wants. So this is a very, very good time where we can introduce healthy eating habits into our children. एंड अगर विटामिन डी के सोर्सेज जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि मशरूम्स, ब्रोकली हम लोग उनकी उसमें डालते हैं उनकी डाइट में, आयरन सोर्सेज जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, काले चने, गुड़, ये हम उनको देते हैं. एंड विटामिन बी के सोर्सेज जो कि आइदर नॉन वेजिटेरियन फूड से आते हैं, वेजिटेरियन फूड में वेरी लेस सोर्सेज, ओनली प्रोबेबली मशरूम्स हम लोग उनको दे सकते हैं, नहीं तो वी कैन गिव देम मल्टीविटामिन सिरप्स. So this is very important कि उनका nutritional component बिल्कुल ठीक होना चाहिए. Another cause for white hair in children is thyroid disorders. So अगर family में या parents में किसी को thyroid की problem है और हमें लग रहा है कि you know the child is gaining too much weight या कोई और problem हमें indicate कर रही है कि उसको एक thyroid disorder है, so we should get that checked. Otherwise, calcium की tablets, एक special kind of calcium pantothenate की tablets आती हैं. That is what we prescribe to the children. And this tablet can be taken for up to 3 months. Unfortunately, जो बाल white हो चुके होते हैं, we cannot bring back color in those, but we can prevent further hair from going white. मैम एक like बच्चों की जैसे skin is very sensitive, right? So what should they apply for general skin care? सर बच्चों का स्किन केयर वी शुड कीप वेरी सिंपल. एक ऑयल रखें, यू कैन यूज सिंपल बेबी प्रोडक्ट्स, किसी भी कंपनी का यू कैन बाय. ऐसा नहीं है दैट यू ओनली नीड टू बाय वेरी एक्सपेंसिव बेबी प्रोडक्ट्स. एंड आई पर्सनली रेकमेंड कि नहाने के बाद वी शुड अप्लाई एन ऑयल टू द चाइल्ड्स बॉडी. We can either use coconut oil. Personally, I find it much more preferable as compared to other oils. But if the child is able to tolerate the smell, sometimes it happens also, then we can use olive oil or badam rogan. And during the day, we can use a more simple moisturizer. रात को सोने से पहले we can use a simple moisturizer. And कभी आपको लगे तो you can give them a bath using कच्चा दूध. को थोड़ा सा पानी कर सकते हैं, जैसे नहाने की बाल्टी के पानी में थोड़ा सा डाल लें. The lactic acid is a good cleansing agent. It's a moisturizing agent also. Plus it's a kind of whitening agent जिसको हम कहते हैं. बट बियॉन्ड दिस कोई ज्यादा स्किन केयर की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों को. मैम एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हेयर फॉल की, तो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर दैट? सर डेफिनेटली ओनली एंड ओनली न्यूट्रिशन. लाइक आई सेड, उनका खाना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. आयरन, प्रोटीन, विटामिन डी, ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जहां से आपके बाल हेल्दी होंगे. सो इफ योर डाइट इज हेल्दी, योर बॉडी इज गोइंग टू गेट दैट मच न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइट, और वही न्यूट्रिशन फिर आपके बालों में भी ट्रांसफर होगी. सो इफ द चाइल्ड इज हैविंग अ हेयर फॉल, आई ओनली एंड ओनली एडवाइज इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन. Because जो hair fall के लिए tablets हैं, they are too big. It's very difficult for a child to take them. So we generally try to give a multivitamin. More than a multivitamin, I only advise improving the nutrition of the child. Definitely, अगर एक बच्चे में thyroid disorders हैं या कोई और skin के disorders हैं, जैसे कि alopecia areata, that needs specific treatment from a dermatologist. But अगर seasonal hair fall हो रहा है, then we only and only need to correct the nutrition of the child. And plus, we also need to make sure that the child's scalp is healthy. हफ्ते में 2 या 3 बार wash कीजिए. कई बार आते हैं कि they don't get time during school days to wash their hair. That also can lead to build-up of a lot of dirt and oil around the hair follicles. उससे भी बाल झड़ सकते हैं. So cleanliness is also very, very important. Ma'am, hair fall के साथ one more thing is that dandruff is a very big problem. So what do you suggest for that? Which oil should we use or what can be done for that? हाँ जी सर, सबसे पहले तो सर if the